more than just an act of writing. It's about crafting arguments, structuring petitions, and creating frameworks so that justice prevails in the society. Therefore, mastering this art is essential for every law student. On that note, we are extremely fortunate to have someone of Advocate Mayank Sharma's caliber with us today. Advocate Sharma is an esteemed advocate at the Delhi High Court with vast experience in litigation and legal drafting. Over the years, he has dealt with a wide array of cases and legal documentations. His practical insights into the real-world challenges of legal drafting, combined with his exceptional courtroom experience, make it the perfect guide for this workshop. Before we invite Advocate Sharma sir, I would just want to give some ground rules for this workshop. The first rule is punctuality. This is a workshop for 3 days. Every student has to come on the allotted time. Active participation of the students is encouraged. Decorum must be maintained throughout and the phones must mandatorily be on silent mode. Certificates will only be given to those students who complete the 3-day workshop and fill the feedback form. The filling of the feedback form is again mandatory. A very important, one of the students each day will be given a cash prize of ₹500, the one who will be the most attentive participant. Without further ado, please join me in welcoming Advocate Mayank Sharma to lead this session. Please give him a warm round of applause. Can we start? Okay, how many of you are from first year? Kindly raise your hand. Most of the guys are from first year. And how many of you want their career in litigation only? Am I audible? We'll make it some interactive session rather than just getting a boring lecture. Right? With respect of drafting, being in law profession, we always face some dispute. And to resolve the available issue or dispute, we use our, arrows in the way of drafting, especially in the civil litigation. And for that, legal knowledge of the subject, what we call act or relevant judgments, apart from the way of protecting the interests of the client, is very much necessary. While drafting any application or any petition, first of all, we have to know the interest of the client, what actually client needs, and how we can help him through the court of law.
इन केस अगर बोरिंग लगता है तो मुझे बताइए बोरिंग लग रहा है, अदरवाइज क्या बैठेगा वो बैठना नहीं पड़ेगा, राइट? To protect interest of our client, we need some weapons in the way of drafting, specifically civil litigation, and that weapon we can arrange from the knowledge, either from the act or from the judgments. But this is the aspect which is very much further more important, is how to make the weapons in alignment. Otherwise, even if we put a lot of material in our drafting, objective won't be achieved. In that first thing, we have to communicate our view to the court by the judges, In case we can communicate our points to the jury or judges, then we can expect favorable order for us or even for our client. In the first one slide, a meticulous process means we have to be very vigilant what kind of word, phrases or facts we are mentioning in our drafting. It might be a small application, it might be a lengthy petition, or any further legal material which we routinely have used in course of law. Material must be concise. It means, like when we are writing answers during our examination days, what are faculty actually expects, that answer must be to the point, so that he can understand or she can understand whether you could answer the question, the asked question or not, rather than just beating the bush. Is what is it must be concise way, the meticulous way. You can say that to the point, whatever you have been asked by your client. What we are studying in this law college, law school, is a critical part. But in practical, what we have to see are client's interest and reputation. To maintain the balance between the both, we have to put our efforts, being a civil lawyer, in drafting. Detailed content I have mentioned, but that doesn't mean that you have to give elaborating everything. Detailed in respect of the facts, relevant facts, without beating the bush. It must be clear, not vague. Judges are also from our society. They would decide the matter on the basis of the relevant practice in the society, and apart from that, the legal provisions. Being a lawyer, if I think I can mislead any court of law, to some extent, some probability about what we say B.A.LL.B. It may be possible, otherwise it will not. In that court or otherwise in the upper court, that question, again will arise, how that relief could be granted or not. Content must be in chronological order. Means if we are stating any issue, we have to start from the base. What was the background of the issue, why it arose, and which
part of that issue or dispute, constrain the litigant to approach the honorable court and under these provisions to support your case. To support that content which you are presenting before the honorable courts, you have to go to the research skill and mind. Is it okay? You have to give a thorough research towards your topic or issue in which your client is interested. Your analytical skills, writing skills, the communication skills, not you cannot don't think that having a good command over best words or complicated words would increase your probability of winning the battle. The reason of having a favorable order is to communicate. You must be able to communicate your grievances. And further, on what basis the court can give orders in your favor. By view of the four corners of the draft, that might be a plain or a pen application, who always see within the corners of the draft. Whatever is written in the draft, it should be only considered. If you are having 7 grounds and you forget last one or any of one ground, it might be possible that during the arguments, court will emphasize on your part. Otherwise, most of the time, even as per law, जो पूछा जाएगा, जो मांगा जाएगा, वही मिलेगा. So it is very much important to enumerate everything, to inculcate everything in your drafting on the basis of your skills, research skill, and what we call practice, and further practice. There are different kinds of documents in which our legal drafting is associated. It might be apart from board procedure, there are some quasi contracts, memorandum of understanding, wills, GPA. There is also usage of that legal terminologies. Every word you will in the first year will learn through the years. That usage of particular word, even usage of will or shall itself is very much important. If in a para, shall word has been used, or in barracks, it means it is mandatory. There is something probably with the will, not with the shall. It means usage of correct word in the correct para is also one of the major aspects of the good writing. Now, the major problem when a law graduate just passes the law college, face is having experience of drafting, which usually during the intensive period or during the initial days of practice, law firm or associated lawyer whom the person is associated either expect or ask. And to have faith in the pre-litigation
I think young law graduates during their law college must start practicing the drafting process. Like you can start with small applications, notices. Today we'll discuss regarding the legal notice so that you can have some idea to practice throughout the college days and even after for fetching work. It is a hard truth that without voluntary expectations, litigation for the starting days is very much tough. If you are a person who just completes his law graduation when reaching the courts, either he is helpless due to the lack of exposure to the industry or not much confident. To have this regarding some work, what in initial days he can get is on legal notices, and from that drafting of that legal notice, he can have somewhat confidence in his litigation or can have some edge while joining any firm or advocate. Right? Can we start discussing? अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है जी सर एक चीज़ पूछनी है तो ये ड्राफ्टिंग है सर इसे मतलब ड्राफ्ट क्यों कहते हैं क्योंकि जब हम ये कोर्ट में प्रेजेंट कर जाए तो इसे ये जब हम ये प्रोसीडिंग में प्रेजेंट कर जाए तो ये तो मतलब ड्राफ्ट नहीं रहता ना तो उसे ड्राफ्टिंग क्यों कहते हैं that draft means totally different from the friend is making. But in the legal parlance, drafting means composition. In literature, in our English, literature, we see drafting as a composition. Here we compose the ideas, right? Facts of the case. So it's okay. We are discussing now how to write, how to prepare a legal notice. That is a basic thing which a young lawyer must know during his or her college days. At the top of the page you can have address of the agency, like we used to write in our English subject with regards to today's. But here something changes in the such scenario that here in the top part of the notice we write who is writing, who is sender of the legal notice. There we mention the counsel who is authorized by the client to send the legal notice. Now, the mentioning of email ID, mentioning of the office or chamber or cell phone number is very must. Otherwise, in the absence of that, the receiver won't be able to reply. And what is the usage of this legal notice? You can say that it is a only warning sign that litigation is going to start. Either we can sit to settle or to resolve the issue, or the client have no faith in further waiting period. They will further sue before the proper court of law. Another thing, the reference number we usually maintain our diaries or
on which number, on which day the legal notice has been dispatched. And the other part is mentioned date, on which date it was dispatched. Not dispatched, it was issued. Dispatch date would be the speed post date, courier date. Okay. Kindly pay attention. We'll have some working on this. We'll get some assignments in groups to prepare a legal notice. I'll help you during the time. To prepare well, at least pay attention. Now, this is the recipient, BKC Cabinet LL.M through its partners, Mr. Gaurav Mandelwal and officer so and so. It is the address of the recipient who will receive the legal notice. Whatever addresses we have or we got from our client, we must mention in the legal, we must mention the same in the legal notice, so that there would be no chance of non-receipt of the legal notice. It might be possible on one address there would be no possibility of receiving or not availability of the person. In that case, we use another address if available. Now, when it comes to mentioning of the, now we can mention of cell phone number and email IDs. In the recent laws, the Supreme Court of India, after the Supreme Court of India, has held that in some cases, if we serve the other party through WhatsApp, Messenger, or email, it is also admissible. Right? Now it comes to title of the notice. Here we can mention our client even for better knowledge of the president. It's legal demand notice. It means we are legally demanding something. He is for the recovery of payment of so and so amount. We have another legal notice which is specially for the check disorder, check bounce cases. This is for the civil loan recovery. It means the recipient of the legal notice, where BKC government owes some amount towards our client, but he is not ready or not paying or returning the amount. So before proceeding for the court of law, now it is very much important that why we are sending legal notice. Legal notice has its place in CPC section 18, but it is only for the government. It means without sending notice to a government department, we cannot sue. In some circumstances, under section 82, we can have exemption by filing application before the court. And there were some circumstances which restrained us. We were not able to send the legal notice. But in civil litigation, there is no mandatory. But to avoid the litigation, usually we prefer to send legal notice, giving a chance of settlement to resolve the issue. Then about authorization. Who has authorized us? Under the instructions from and on the behalf of our client, Register International through its authorized representative, complete details of the authorized person who has authorized the counsel. Here I have been authorized to send the legal notice. So on whom behalf I am sending the legal notice? It should be mentioned. In the first paragraph, we slightly describe
regarding the issue regarding which the legal notice has been issued. And after a slight discussion, after having discussion over the reason why the legal notice has been issued, we state our legal right to recover the same as per law of land. That part we established that we are entitled, or my client is entitled for that discussed amount which was taken by you in some dark of help or something else, right? But prior to demanding that amount, it must be established, right? We can even mention that intentional avoidance of the repayment of liability, apart from civil liabilities, criminal liabilities will also be there in case of non-fulfillment of the demands. Last part is very much important again. It is a part where you finally go to complete the demand of your client. And at last, finally, your signature page. You have to sign each and every pages of the legal notice to show the authenticity. And you have having any question regarding this draft? Everything is clear. Sir, I just wanted to know what is MSME Act 2006 that you have mentioned. It will be better we have such discussion later on in this one subject. Otherwise, we won't be able to complete our question. MSME, what slightly what MSME Act has been adapted for the small enterprises, facilitate the economic course to remove the overburden. Separate and that has been informed by the legislature to help out the scale enterprises to recover their amount from the their identification with whom they are having their business terms. The specific thing in that law is that there is some better aspects of recovering the amount. Instead of if that registered MSME enterprises opt for recovery of the amount through MSME Act as per the new legislative provisions, it would be better to use MSME instead of the regular civil. Okay. Regarding the legal notice, civil one. या तो सब कुछ आ गया कुछ भी नहीं आया.
one we will discuss about the legal notice regarding negotiable instrument act. उसी कुछ peculiar features हैं. First one, just after dishonoring of the check, within 30 days we have to issue notice stating that the check which was issued by you means the receipt of the legal notice or who had issued the dishonored check. That same check has been dishonored. The legal notice must be sent within 30 days as per Act, and after waiting for 15 days, if amount has not been given or returned as per the legal notice, after 15 days we can approach the concerned court for filing petition or complaint regarding negotiable instrument act. Right? In that interim, one must remember that at the end of the legal notice, like with the previous one, demand, last paragraph of the legal notice, where we demand, there must be demand of that amount only which was a part of check amount. In addition, nothing else. A number of negotiable instrument act cases got dismissed due to the seeking of additional amount by the complainant. Right? Like we discussed the legal notice of the civil procedure code or civil legal notice. In criminal also, in the negotiable instrument act, we mentioned the title who is sending the legal notice, to whom, then it comes to the title, legal demand notice under section 138 of NIA. Then we mentioned under whose authorization we are sending that legal notice. And regarding later on the next paragraphs, we mentioned the facts, in a very short version. It is also part of a drafting that if we are heading towards litigation, we must adhere to the rule. Never and never expose your part fully. Whatever needed, it means for the negotiable instrument act, there is no mandatory part to disclose the each and every fact or the background transactions. There you have to only mention that a check which was having that number drawn in that bank branch, dated so and so, have got dishonored with the reason, whatever reason, funds insufficient, signature mismatch, account closed. These all will attract the penalties under the negotiable instrument act. This guidelines help us, while forming the complaints. It might be possible that we have to, that is not already correct, but in some time to have favorable orders in terms of justice, we have to somewhat manage or manipulate the events, but in good faith only. This is the title legal demand notice under section 138 NIA. One more thing kindly remember, always be polite. While drafting any litigation, any application, any notice, legal means a sophistication, a civilized language. No need to use any kind of words which attracts any threats
Shortly, I will ask some questions regarding our demonstration. The guys who are speaking to your companion, kindly pay attention. Para first, you can have a look. As you are known to my client and having good relations, that is sufficient. There is no need to describe each and every, facts of the relation, how they met, how they were having, relations or transactions. On a repeated request for friendly loan, there must be specifically mention of the amount of loan. What amount? Negotiable Instrument Act or cases under NIM only survives to the legal act, which is legal, not illegal. It means what? Here I have only mentioned friendly loan. It might be possible that there are some other transactions, but that are in different domain. Right? In the second paragraph, you state somehow he has arranged whatever, and that amount was given to you. Now the relevant part, paragraph 5. You have to mention the check number, right? Check number. Bank details and date. In addition, there is a document which concern bank issues, which is known as bank running memo. Bank running memo. Anyone of you, familiar with this word? Bank running memo. Nobody. किसी को नहीं पता? Bank running memo. A bank running memo is a small document which is issued by concerned bank, in which the complainant had deposited checks issued by the accused. They issue a document which is known as bank running memo, which mentions the reason of disorder. It might be of reason with funds insufficient. It might be of signature mismatch, bank close. These all are sufficient to attract privileges. Now we can have, within the regulation, if a bank check is within 3 months of the period, we can, as much as we can, get it dishonored. After, sufficiently get dishonored, or 1 or 2 times, as per the instruction of the client, we can proceed for further issuance of the legal notice just immediately after having the knowledge. Here it is down. 2 times it has been mentioned that 2 times this complainant had approached the bank to get his dues or a payment of loan, but twice the same was dishonored. In the last, that is very important, what we are seeking. Again, if we seek unnecessary amount or additional amount, it might give you a position to lose your case. Only seek the check amount which got dishonored. Let us the signing page. These are the 2 very short drafts regarding the drafting practice. Although we can say that there is a set of format, but that format we have to learn it. Everything we usually do in our course or in the studies is part of only practice. Some words,
some paras, some phrases, some sentences are always there to be part of format. But in during the putting the content in format, we must be vigilant while drafting our legal notice. That must be in the four corners of the law, not in excess. Any question regarding 128? Legal notice? Please. See, as per general law, one can have actions regarding the person who is sending legal notice, who is a lawyer, and he is responsible for the words. We are just not postmen, right? It's a very good question that if our client asks to write something such is very, threatful, अब डरा दो उसको, वो पैसा दे देगा. That is our legal. हमें उतना ही करना है जो हमें law abide करना है. It means what? We have to write each and every word which gives our placement. In the starting, I had given statement: be polite, be humble, and firm. No need to use any kind of word which is not civilized. That's why a legal notice issued by to the council only. Any individual may issue notice, but legal notice, it amounts to issued by the council only. And for that, if concern Bar Council of Delhi, like concern bar, may take capital actions, right? If some advocate who is replying the notice ignores, it's okay. Usually, in the Vaichara, nobody takes such actions, but it might be possible. If that content reaches concerned bar council, so what actions will be taken also. Right? But one must avoid such kind of content which may any further question? Sir, Please. I want to ask that is it mandatory to attach the evidence related to this check bounce? No, there is no need of any attachment of evidences. You have to just state the facts of the cases only. There is no attachment needed. So, It means attachment is only mandatory when we file case. when we file case only, and in when we file case, we file an evidence file affidavit. Okay. Right? In that affidavit case, you give the evidences like the dishonored check, the returning memo, if any contract or written material is available to the client. Generally, two things are very much important: original check, okay, original check and returning memo. It might be possible that check may be misplaced or misplaced. Then what happens? Then we have to do pre-submitting evidence to the bank official. And have to convince the court that actually I was having the original copy of the check, but due to some unavoidable circumstances, I'm not in a position to produce the same. The bank official having records can come with the record, relevant record, and can corroborate our statement. Thank you. Anybody else? दो लीगल नोटिस किया हमने. अभी मैं सवाल करता हूं तो बताएगा मेरे को प्लीज. पहला सवाल ये है, आप लोगों से लिखने में सुधार करें. एक मिनट. Sir, the legal
नोटिस इशू हो जाने के बाद अगर वो पर्सन हमें मतलब हमारी बात को ओबे नहीं करता तो उस पर फिर क्या एक्शन हम kindly wait करेंगे. Within 30 days we have to issue the legal notice after this order of the check. We'll wait 50 days from the date of receipt. From the date of receipt of the legal notice by the other party. After waiting for 15 days, right? We have our right to approach the order report further 30 days, within 30 days, further 50 days. After completion of the 50 days, another 30 days we have to approach them. फिर री इशू होगा उसमें इशू क्यों करेंगे? अगर ऐसा होता है, बस करें आपने लीगल नोटिस इशू किया, एक्स पर्सन को, आपने उसको इंटीमेशन किया कि मेरे क्लाइंट ने बताया है कि आपने उसको 2 लाख रुपए का चेक इशू किया था, वो डिसऑर्डर हो गया है. मैं उनके बिहाफ पर एडवाइस दूं, आपको डिमांड करता हूं, आप इतना अमाउंट 2 लाख रुपए मेरे क्लाइंट को विदिन 50 डेज से पे करें. विदिन 50 डेज, 15 दिन का लिमिटेशन पीरियड. इन केस अगर नहीं करता है, तो आप कंडीशन कंडीशन 50 डेज you can oppose the order report by filing proper application complaint under negotiable issue. Right? चलिए अभी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करते हैं. ये छोटे बच्चों के लिए, नए बच्चे हैं, उनके लिए बेसिक हमने डिस्कस किया है सिविल लिटिगेशन के अंदर और बर्थ लिटिगेशन के अंदर किस प्रकार से नोटिस करते इशू करने. जैसे आप लॉ कॉलेज पूरा करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, इट इज वेरी डिफिकल्ट सर्वाइव करने के लिए. वो क्लाइंट देंगे, क्लाइंट आपको मेजर काम नहीं देंगे, और आपको वर्कशॉप कराई जाएगी कॉलेज की तरफ से. बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है. इनको प्रैक्टिस कर लीजिए. थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत जरूरी है अच्छी ड्राफ्टिंग करने के लिए, बट लॉयर बनने के बाद में व्हाट हैपेंस, पेरेंट्स वुड आल्सो एक्सपेक्ट सम कोई कमा के लेके आओ. अभी कॉलेज पूरा हुआ, उसके बाद में किसी ने पूछा आप लॉ ग्रेजुएट थे जी, एनरोल्ड है जी, एनरोल्ड. आप हमारे लिए कुछ काम कर सकते हैं? अरे भैया सर मैं मेरे सीनियर से बात करता हूँ. जी मैं कर सकता हूँ. आई हैव लर्न टू माय कॉलेज डेज. जो एक्चुअली लर्न करेंगे तो अभी आए केवल सर्टिफिकेट के लिए वर्कशॉप किया, इट विल ओनली शाइन इन द सीपीयू. राइट? मेरे पास आएंगे, मैं पूछूंगा बताइए जरा, नहीं बता पाएंगे आप, मैं समझ जाऊंगा सर आप वर्कशॉप करने के पीछे बैठ के. राइट? अभी 2 चीजें जो सिखाई है वो काम की चीजें. कोई भी स्टार्टिंग में क्लाइंट आपको बड़ा क्लाइंट बड़ा मैटर नहीं देगा, छोटा काम देगा. टेस्ट करेगा, टेस्ट के नॉलेज टेस्ट करने के बाद बड़ा काम देगा. सब अगर लिटिगेशन में आना है, लॉयर बनना है, कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, उसमें भी ऐसा ही होता है. फिर आपको एसोसिएट, जूनियर एसोसिएट एंड फर्दर आपको सेल्फ लेने पड़ेंगे. बट अगर you will be able to show that you have knowledge of your subject, practical knowledge. अब आगे it might be possible टॉपर होंगे कॉलेज के अंदर, लेकिन प्रैक्टिकली आपने लगातार, ऐसा कई कॉलेज में होता है, वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड से उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता बच्चों का. बच्चों को भी पता नहीं होता है क्या फर्क पड़ता है. ठीक है चलने दो, जब पूरा हो जाएगा देखेंगे, तब वो हेल्पलेस रहने जाते हैं. अच्छा, अगर मौका मिल रहा है ऐसा कॉलेज आपको आगे भी सोचता है, वेरी नाइस. और ये जो एक ड्राफ्ट है एक दिन में नहीं आएगा. अभी भी आप टूटी लीगल ड्राफ्टिंग करेंगे, बट कोई जरूरी नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, सबको ऐसे करना पड़ता है. स्कूल डेज में नोटिस सीखा था, लेटर सीखा था, उसी को हमने लीगल एक्ट में किया. थोड़ा सा स्टैप ओवर किए जाएंगे, ये बहुत बेहतर आपकी हमारे इंग्लिश को पूरी अच्छा नहीं, आप बहुत अच्छे से लॉ को जानते हैं, दैट इज आल्सो नॉट सफिशिएंट. Somewhere you must be, you have to be jack of all trades. Later on you may maybe master of
something, some particular subject, right? अभी क्वेश्चन मैं करता हूँ सिविल लिटिगेशन में से अंडर which provision has been mentioned in respect of the notice in our legislature? Anyone? जी बताएं. Sir, it's 138. Civil one. It's very nice. I appreciate your efforts, but it was for the negotiable instrument. Sir, CPC Act 83. Section 80. Section 8. 80, Section 8. Okay. Is it mandatory to issue legal notice in a civil proceeding? Please. So transmitting it to the government officials, it is necessary, but transmitting it to like a general person, it is not necessary. Precisely. For the government officials, if we are making party in our subsidiary litigation, government or any government body, it is mandatory under Section 80 to issue legal notice or notice, सूचना, ठीक है? That you are at fault here, kindly rectify the same by appropriate actions. Otherwise, my client has advised me to take appropriate actions before the court of law. But in civil one, there is no mandatory. But generally, we prefer to issue legal notice to avoid the complexity or the better, favorable, better benefits of the benefits of client. In civil litigation or other litigation, what actually means is client satisfaction, but in a good way. Not to mislead, misguide, by misleading or misguide. In a proper legal good way. You may, after becoming a lawyer, for the issuance of legal notice, you might, charge your client 10,000 bucks or at least 5,000 bucks, and for filing a civil suit, you might at least, charge it in your initial days even 50,000 bucks, 45,000, and later on, as per your experiences, 2.5 lakhs, and sky's the limit. But there, do not lose your client by some other way. Soon he will, know that it was better to have issued a legal notice. It might be possible, it would have been possible that the person who was, almost ready to settle the matter, but, he was not having any chance to break the silence. Now, can we raise the people who are in higher services, 4th, 5th, 6th, 7th onwards? Okay. Now comes to very interesting topic, which will be covered in our drafting. How many of you are familiar with the moot court? And how many of you have attended moot court? Okay. Yes. During your course, you will have opportunities to have moot court competitions, right? I'll give you somewhat brief regarding what moot court memorial is. Right? Although it's a very lengthy process to prepare the same, but to give some ideas. After that, we will discuss about the demonstration. Interesting subject. Right? But later on, time won't permit.
mock test. After becoming a lawyer, you will represent your clients in the real world, in the real court of law. So during your law college years, you can have opportunity to interact the future circumstances, to be a lawyer for claimant or respondent, petitioner or respondent, right? So there is a subject which you know usually during the competition whatever the subject time to time school board competitions whenever it is being will be given. Okay, this was the first one. On the right top, MT430. It's your pin code. Was that person? Please raise your hand. Very good. It's your pin code. It means 4 to 5 people or 10 people, depending on the situation. Usually, the auditor of the college, assign the pin. Next one is the code before which we are pleading before the Honorable Supreme Court of India. Now, during the competition, you will have another some funny name you can have. That might be not a possible name. Then it's to special education. If SLB words a sentence, the phrases comes, then it means it pertains to Supreme Court of India. Honorable Supreme Court of India. Article 136 having the powers which is vested in the Honorable Supreme Court of India, right? To set aside any kind of order except some military, governed tribunals. Then it comes to in the matter of Mahmood Khan, appellant, who is going to appeal. It might be possible that this Mahmood Khan was not fortunate to have favorable orders from the below Honorable High Court. Then he opted for the SLP, special education, to get set aside the order of the Honorable High Court. Versus किसने किस पे किया? वादी प्रतिवादी इंडिविजुअल है दोस्त। मकबूल खान appellant है versus B.A.LL.B and others. इसका respondents जो जवाब देंगे। ऐसे हम ये सोचते हैं कि this बनाम means versus। कहाँ पे किया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में किया। पिन कोड है टॉप के ऊपर। In the matter of मुद्दा क्या है? What is matter? In the matter of मकबूल खान appellant जो अपील कर रहा है। अरे इसमें कई सारी चीजें आएंगी if you are drafting, if you are filing civil suit, plain, then who is filing the plain is known as plaintiff, and who will contest the matter will be known as defendant. When it comes to the matrimonial matter, usually petitioner and respondents in the matrimonial. In the 138 one, there would be complainant who files the case and accused, Ochi, who has committed some offence. And I accuse what? Criminal. Till now it comes under criminal provisions. Now we address to our submission to the Honorable Chief Justice of India and his companion justices of the Honorable Supreme Court. अब कोर्ट्स को डिसाइड कर रहे हैं किसके पास आप फाइल कर रहे हैं। अगर जो सिविल कोर्ट्स में हैं बस अगर आप दिल्ली में टीजर में करते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज यानी कि सुप्रीम है। आप किसी भी एप्लीकेशन को इनकेस फाइल करते हैं कॉलेज के अंदर तो क्या करते हैं? इसको लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, टू द चेयरमैन, राइट?
अब हाईएस्ट हायरार्की को हमेशा एड्रेस करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि whether they will have the matter to be decided or their subordinates, right? There is a first which is the moot court memorial. Kindly pay attention. Memorial on the behalf of appellant. To whom you are representing? आप किसके लिए हैं? मकबूल खान के लिए हैं या फिर रेस्पोंडेंट जो भी अवेलेबल उनके लिए? Next one is list of allegations. अब during the preparation of the moot court memorial, आप एक तरह से बंच तैयार करेंगे, जैसे प्रोजेक्ट असाइनमेंट क्या करते हैं, कंटेंट क्या करेंगे, उसमें अपने केस के बारे में सब कुछ लिखेंगे. It would certainly have some allegations in respect of some law journal or something else from the reports that you have mentioned in your memorial. So these are the allegations. The second page contains in order. Another statement of jurisdiction. Now what is jurisdiction? Anyone of you familiar with the word jurisdiction? Kindly raise your hand. Only two? बताएं. सर जुरिडिक्शन मतलब कि प्रॉपर उस जुरिडिक्शन की कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है या कहाँ तक का उसका बॉर्डर लाइन है, कहाँ तक का उसका बॉर्डर है. चेक कर दिखा. लिमिट सेट कर रखी है हर कोर्ट की. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को एक रेवेन्यू जुरिडिक्शन दे रखी है कि जितने भी सिविल मैटर्स होंगे, दीवानी मुकदमे होंगे, उस डिस्ट्रिक्ट के उस कोर्ट में जाएंगे या 4 डिस्ट्रिक्ट्स के उस कोर्ट में जाएंगे. लाइक if we take jurisdiction for the CPJ, then we have West Delhi and other one, Central Delhi. The CPJ court protects the rights of the citizens in which comes under the West Delhi and Central Delhi. Like in Rohini, North and Northwest, Dwarka, Southwest, Saket, Southeast and East. Similarly, above higher courts like Delhi High Court. Delhi High Court protects your rights throughout the territory of Delhi. Have you heard of Delhi High Court at New Delhi? Why at New Delhi? Because before partition, there was a bench in today's Pakistan of Delhi High Court. In the statement of jurisdiction, we mentioned the Honorable Court is having jurisdiction to decide or dispose of the matter. Moving forward, summary of your arguments. It might be possible your arguments may take 20, 25, 5, 50, 100 pages. But you have to give a gist. So that is summary. Summary देना है. क्या gist है उसका? आप जिसके rights के लिए claim कर रहे हैं, represent कर रहे हैं, उसकी summary क्या होगा? It will, further there are issues. Do you know what the issue? Issue का मतलब है मुद्दा. किस मुद्दे पे लड़ाई करनी है? लड़ाई इस प्रकार की लड़ाई कोर्ट में किस प्रकार से करें? अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ब्रदर्स के बीच में है, तो क्या उनके इश्यूज हैं? अगर अभी हमने बंधन केस का एक डिस्कशन किया था, सिविल लिटिगेशन पे लीगल नोटिस इशू डिस्कस किया था, तो उसमें क्या इशू बन के आएंगे कि whether the plaintiff is having liability to pay the defendant or not. It will, who will prove this? The plaintiff will prove this. Here the issues 2, 3 and all, whatever the issues there are. Then it comes to argument
एडवांस। अब आपको हर इशू के ऊपर अपनी आर्गुमेंट एडवांस करनी है while supporting with the latest laws। किसी बुक का कोई पार्ट है, किसी अच्छे ऑथर ने, किसी recent judgment ने आपके उस ग्राउंड को सपोर्ट किया है, you will mention that। You can have a look at how neatly and with the caption like the title and subtitle the team has written the content. Like whenever you answer any question during your examination, how much you can help your examiner to get your correct answer in his mind. We use heading, subheading, title, subtitle. Otherwise, what we do not know any answer, then what we do usually, बोल कर दो उसको पैराग्राफ बना दो। But अगर हमें आता है उसको, then we usually what underline to get the attention of the judge here. If you are right, if you are a student, then we usually underline the content. Here, the team has done this, very good job regarding heading, subheading, titles. You can have, you will, have these tablets after discussion. Like he has mentioned also violation of fundamental right. How Maqbool's right was, violated. In the bottom one, kindly pay attention. 21, 22, 23, 24, 25, Lily Thomas and others. The team has mentioned the relevant case laws. It means there was thorough research. It was not just a assignment that cut copy paste करो और दे दो। आपको अपनी आर्गुमेंट्स को समझाने के लिए पहले रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, उसके बाद आप एडवांस करेंगे। मूड कोर्ट मेमोरियल में लाइक जजेस बैठे हैं, आपको ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप ओपन कोर्ट में हैं। उससे पहले जैसे हम अपनी फाइल तैयार कर देते हैं, प्लेन रिटन स्टेटमेंट, रिजॉइंडर, देन फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, एविडेंसेस बाय वे ऑफ एफिडेविट, एविडेंसेस, सम डिफरेंट एप्लीकेशंस, उनकी रिप्लाई, फाइनल आर्गुमेंट्स, एक बंच तैयार होता है, केस फाइल तैयार होती है। तो दैट इज ओनली केस फाइल इन द अपेलेट कोर्ट। हाई कोर्ट में अगर आप रिट फाइल करते हैं तो उसका काउंटर एफिडेविट आएगा, पहला रिट पिटीशन, देन रिट पिटीशन के साथ में काउंटर एफिडेविट। रिस्पोंडेंट्स क्या कह रहे हैं, रिस्पोंडेंट्स ने क्या रिप्लाई किया, रिजॉइंडर, रिप्लाई ऑफ द रिप्लाई फाइल बाय द रिस्पोंडेंट्स। मैंने केस फाइल किया, रिट फाइल किया कि मेरा क्या फंडामेंटल राइट अफेक्ट हुआ है, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसको पार्टी बनाया। गवर्नमेंट इंडिया क्या करेगा, काउंटर एफिडेविट फाइल करेगा। नहीं, हमने नहीं करा, मैं अपना रिजल्ट फाइल करूंगा। क्यों करूंगा? इनके समथिंग न्यू have been mentioned by the government of India or any statutory authority. Then comes to the arguments. How is it? आप submission दे दो अपने। It means the file or bunch of document or pleadings, what do we call? Pleadings is complete. Now judge can decide the matter. This is the same way moot court memorial acts as a material giving hard copy of your oral advanced arguments. Please proceed further. It's a lengthy one. One of the most important prayer. आपने बहुत कुछ बता दिया, ऐसा था, ये राइट उसके बनते थे, ये राइट नहीं बनते थे, it was entered for the gap protection, or how these rights were violated. आपने ये भी बताया कि नहीं होना चाहिए था, by stating the case laws.
Right? Now, you seek relief from the court. आपको relief क्या पाना है? That must be clearly mentioned. आमतौर पे सबसे पहले हम चीज क्या मांगेंगे? Whatever right है तो allow करो. relief मिल सकते हैं, consequences dependent है. Right? And the details are given by the party or details of the team members who has, worked very hard to prepare the Woodford Memorial. This bunch, usually gets a bit, to the judges of the Woodford competition. After that, you have a chance for presenting your arguments. जी सर देखो यहाँ मेंशन है ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट. व्हाट इफ लॉयर खुद ही एप्लीकेंट है, अपना केस वो खुद फाइल कर रहा है, तो स्टिल तो यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट. on the behalf of appellant the counsel is ready. बट सर हम खुद ही काउंसिल हैं, हमारा केस है, हमने खुद अपना मेमोरियल बनाया है. Okay. इंडेक्स तो फिर आप नीचे काउंसिल लिख दीजिए. आपका सवाल ये है कि इसको लिखा है ऑन द बिहाफ ऑफ appellant. यहाँ पे appellant कौन है? मकबूल खान है. राइट? केस तो मकबूल खान की तरफ से दाखिल हो रहा है. राइट? We are counsel. We are, representing the rights of the Maqbul Khan. We are not Maqbul Khan. If in individual capacity, Maqbul Khan himself pleads his case, then we will not write counsel would happen because it's not counsel, it's not lawyer. Usually, citizen of the country prefer to be represented to a lawyer. Because he is one who is specialized in his task. Okay? अगर लॉयर नहीं है तो रोकना नहीं है. लेकिन अगर वुडफोर्ड मेमोरियल के अंदर कोई पार्टिसिपेट करेगा, वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. ठीक है? प्लीज कोई सवाल किसी के पास में वुडफोर्ड मेमोरियल में लेके, अगर खुद ही एडवोकेट है कोई बात नहीं, तो लिख देगा, मेंशन कर देगा. काउंसिल होगी, सॉरी अपने नाम लिखेगा, एडवोकेट लिखेगा तो कहता है. बट आमतौर पे क्या होता है कि कोई भी काउंसिल पर्सनली अपना मैटर कभी कंटेस्ट नहीं करता. बिकॉज सम ऑब्वियस रीजंस. आप ये मान सकते हैं, कितना अजीब सा लगेगा कि कोर्ट के अंदर वकील साहब खुद ही अपना मुकदमा लड़ रहे हैं. और वैसे भी आमतौर पे कुछ पर्सनल चीजें होती हैं जो पर्सनली अनबायस्ड तरीके से नहीं होती. इन केस एक डॉक्टर अपनी फैमिली मेंबर का अपना ऑपरेशन नहीं कर सकता. अभी मेरा कोई कजन मेरे पास आएगा जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, और वो बोलेगा भाई मेरा केस लड़ रहा हूँ. केस लड़ना अलग बात होता है, बट उसको गाइड करना to get best from the emotions, it is very much difficult. आप ग्रुप में गए, आपने टाइम के लिए लड़ा, वो आपकी ड्यूटी है. लेकिन अभी आप अपना केस खुद लड़ रहे हैं, तो आपके माइंड में क्या है? बायसनेस. आप बोलो जैसा बात तो उसी के पास उतरेंगे. वो कुछ चीजें होती हैं जो प्रैक्टिकली जब आप उतरते हैं तब ज्यादा अच्छा महसूस कर पाते हैं. ओके, नाउ वुडफोर्ड मेमोरियल का कुछ आइडिया हो गया आपको. मेजरली वुडफोर्ड मेमोरियल एक तरह से बंच, एक डॉक्यूमेंट ऑफ बंच है, बंच ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर whatever arguments we are addressing to the competition judges, we usually compile the same prior to advancing the same. And this is only the format by using
which in a chronological order we put our content before the judges. Anyone else? Any question? Ji. When we write statement of facts in moot proposition, so we have to write it according to the perspective of the party or just use the facts? No. I asked a question. I think it's a very important question. I will give you. Sir? Just. So when we write the statement of facts in the moot proposition, we have to take it according to the perspective of the party or we have to write neutral facts? Kindly pay attention to the question. Very important question. ये सवाल किसको समझ में नहीं आया? मेरे बार पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। इनका सवाल ये है कि जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है उसके अंदर हम अपने जीवन की बात लिखेंगे या फिर जनरल बातें लिखेंगे। Statement of facts covers the all relevant facts. Right? Please pay attention. Please pay attention. Statements of fact covers the all relevant facts which must be disclosed before the honorable court. Otherwise, it could set a negative effect. But it is the duty or it is the capability of the lawyer how to make a mirage to protect the interest of the client. आप डायरेक्टली कभी आईटी कर सकते हैं नहीं मैं इसको नहीं बताऊंगा तो आप इसको अभी कुछ दिनों पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 2 दिन पहले की बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान बोला था वी बिलीव यू वॉइस के लिए वी बिलीव यू एंड योर रॉन्ग स्टेटमेंट शीट्स आर फेक ready or not? We are officer of the court. We are having some duties towards the judges court. We have to maintain decorum of the. हमें ऐसा भी आज आप एक बार मिसलीड कर सकते हैं अगली बार जज आपको समझ लेगा कि ये बंदा मिसलीड करता है मैं इसकी बात को नहीं मानूंगा मैं हाईकोर्ट में काम करूंगा मुझे हाईकोर्ट में काम करना है या दिल्ली में काम करना है अगर मेरे किसी काम में स्पेशलाइजेशन है मैं हर रोज काम कर रहा हूँ तो 60-70% मेरी वही जजेस होंगे जिनसे मैं रोज इंटरेक्ट कर रहा हूँ इट माइट बी पॉसिबल लाइक यू नो फर्स्ट मैंने कहा था कि हो सकता है 5 लाख बिल्कुल बना दिया जैसा दैट मे बी यू नो बाय चांस बट दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस राइट यू हैव टू मेंशन ईच relevant fact having mind of clever mind interest of your client right thank you अभी हमने 3 टॉपिक कवर किए लीगल नोटिस कैसे तैयार करने हैं सिविल के लीगल नोटिस वर्क करने के कैसे तैयार करने हैं एंड देन कम्स टू मूड कोर्ट मेमोरी और मेरा सजेशन है जितना हो सके मूड कोर्ट मेमोरी में पार्टिसिपेट करना हो उससे क्या क्या फायदे होंगे आपको पहली चीज ये हो जाएगी आपको रियल वर्ड से कुछ आइडिया हो आप लेबोरियस बनेंगे मेहनती बनेंगे ये प्रोफेशन सिर्फ मैं लॉयर हूँ नॉट सफिशिएंट एक नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होता है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आपने डिग्री लिया आपने एनरोल करा लिया आप कोर्ट में नहीं गए आपने इस प्रकार से एक आप रेगुलर कॉलेज में आते हैं आप इंटरेस्टेड हैं टीचर से इंटरेक्ट करते हैं बैठते हैं उनकी बात सुनते हैं आप यहाँ टेक्निकल पे आके बैठे हैं सुनने के लिए आए आपका इंटरेस्ट एक आपको डिग्री मिल जाएगी अगर ऐसे बचे इश्यूज कई सारे इश्यूज तो कहते हैं कि आओ मत आपको हमारी हम आपकी डिग्री हो सकते हैं तो क्या उनके लिए अपने इश्यू के लिए कुछ हम्बलनेस कुछ कंसर्न कभी होगा नहीं होगा जिस कोर्ट के लिए मैं जाता हूँ अगर मान लो मेरा उससे कोई इंटरेक्शन नहीं है मैंने उसको महसूस नहीं करा है मैं उसका रिगार्ड नहीं करता हूँ राइट तीसरा टॉपिक हमने किया मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन तो मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में जितना हो सके उतना पार्टिसिपेट करिए अगर
कहे कि यार पढ़ाई लिखाई मेरे बस की नहीं है, वकालत मुझे अच्छी लगती है, तो यू आर इन ए रॉन्ग ग्रुप। क्या पढ़ना ही पड़ेगा और अबाव एवरेज चाहिए ज्यादा। ऐसा नहीं है कि केवल केवल पढ़ना ही पढ़ना, ये सारे सेंसेस आपके एकेडमिक में रहने चाहिए। यहाँ पे 100 तरह के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हर किसी का अपना माइंडसेट है, हर किसी का अपना विचार है। आप यही मान के चलिए आपकी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्यूचर ऑफ द नेशन है। आप में से ही आपके जो दूसरे सहयोगी हैं साथ में है दूसरे कोर्सेज के, वो किसी लिटिगेशन में आएंगे। हर किसी का अपना एक माइंडसेट होगा किसी भी इशू को लेकर, तो उस चीज को जज करना और एक लॉयर की बात में क्लियर बताऊं नहीं, लॉ कॉलेज पूरा करने के बाद में लिटिगेशन में उतरना एक वाइट से डार्क में करने के बराबर। वाइट इन द सेंस यहाँ पे टीचर्स आपको ना टॉर्चिंग लाइन के बड़े रहते हैं, पता नहीं लेंगे आप लड़की लेते हैं सही है, वो जो है वहाँ आप लड़ाई वहाँ को आपको खुद ही समझना पड़ेगा। भाई लड़की लड़कियाँ अच्छे रेफरेंस के अच्छा मेंटर मिल गए क्योंकि बहुत ज्यादा रेफरेंस है, कोई किसी को नहीं सिखाता है क्या करना, कोई किसी को नहीं सिखाता है, सबको सीखना खुद पड़ता है। एक कॉलेज लाइफ ऐसी है जहाँ टीचर सिखा देता है, सीख लो भाई। दो कारण हो सकते हैं कि एक आप उसके डिसिप्लिन है कि भाई मेरा स्टूडेंट है कल मेरे बच्चा याद करेगा, मन में बुरा नहीं कहेगा कि यार हमारा टाइम पर आपको सिखा रहे हैं। और दूसरा ये समझते हुए कि आप देश के भविष्य हैं, आज से 10 साल बाद आपकी कहीं ना कहीं बेहतरीन जगह पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे होंगे। और अपार्ट फ्रॉम अपने हमारे एस्पिरेशंस होते हैं, मुझे लॉयर बनना है, मुझे जुडिशरी में जाना है, मुझे टीचिंग में जाना है, हमारा कंट्रीब्यूशन भी होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोसाइटी के लिए, राइट। अभी का जो टाइम है, अपार्ट फ्रॉम एंजॉयिंग योर लाइफ, whatever you deem proper, fit and proper, अगर लॉ फील्ड में रहना है, आगे करना है, चाहे आप जुडिशरी में जाना चाहें, चाहे टीचिंग में आना चाहें, चाहे वकालत पेशे में आना चाहें, पढ़ना पड़ेगा और जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और इस चीज के लिए भी तैयार रहिए, हर बार फेवरेबल ऑर्डर्स नहीं मिलते। एक फेवरेबल ऑर्डर मिला बहुत खुशी हुई, दूसरा फेवरेबल ऑर्डर नहीं मिला दुख होगा, पर धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे, आपके लिए वो चीज नहीं पड़ता, आपको अपने अच्छे से करना है। जो रिकॉग्निशन होता है वो क्लाइंट के लिए, जुडिशरी के लिए वो ये होगा कि आपने कितने बेहतरीन तरीके से अपने एफर्ट्स लगा दिए चीज को प्रेजेंट करने के लिए। रेस्ट इज नॉट योर केस, वो क्लाइंट का फेट है। आपको ही पता था, क्लाइंट को पता कि कितना पड़ता है, इतना बताना ये भी जरूरी है, इतना भी नहीं बिल्कुल होपलेस हो जाए, इतना भी नहीं रहे आप क्लिक करके रियलिटी के साथ रखो उसको, सर्कल वही रहता है। एक में बुराई करी वो बुरा हो गया, ये किस प्रकार से है, किसी बच्चे ने एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेके आया, घर पे गया पिता ने टॉफी दिया उसको, खुश हो, छोटा बच्चा वो जाके और मेहनत करेगा, मेरे को टॉफी लेगा, तो सर्कल क्या करेगा, ऐसे ही बोल करेगा, बढ़ता चलेगा। और एक बार अगर मान लो उसने गलत किया, हो सकता है एक बार मौका मिलेगा, एक बार मौका मिलेगा, एजुकेशन में बहुत मौके, बट उल्टा जो चलता है, रिमाइंड भी होता है, गलत किया तो खराब हो गया और खराब हो गया और खराब हो गया। तो लिटिगेशन के अंदर आने से पहले अपने आप को तैयार करो, वरना फिर कुछ ऐसा होता है जैसे आप देखते हैं ना, भीड़ की भीड़ लगी रहती है, चाहे जॉब के लिए हो, चाहे फॉर्म्स भरने के लिए हो। याद रखिए अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं थी, अपॉर्चुनिटी है तो काबिलियत की कमी। मेरी बात सुन रहे हैं? अभी क्या भला होता है कि नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप ये देखिए काबिलियत कितनी है। अभी हमने जो छोटा सा काम सीखा आज, जो किया छोटा हो सकता है, आपसे 4-5 साल बाद आपको लगेगा बहुत बढ़िया चीज, लेकिन बढ़िया से सुन के नहीं, ये जो फॉर्मेट्स में आपको मिल जाएंगे, सर्कुलेट हो जाएंगे, इसको प्रैक्टिस करो। और जिस दिन पहली दिन
किसी क्लाइंट ने आपको 2000 रुपये दिया, आप हमारे यूनिवर्सिटी को बगीचा पढ़ के आपको सीटी को ज्वाइन करोगे, सेकंड मिलेगा, हो सकता नहीं भी मिले, नॉट नेसेसरी। बट वो क्लाइंट आपको 2000 रुपये देके जाएगा और कुछ अलग होगा। और वो क्लाइंट अगर मान लो उसका मैटर अच्छा होता है तो वहां से आपकी लिटिगेशन स्टार्ट होती है। मैं तो कहता नहीं, मेरे जो स्टूडेंट बनते हैं, आई हैव ट्रेन्ड अराउंड 50 यंग डॉक्टर्स। मेरा तो एक महीना ही कहता था आप लर्निंग करो, अर्निंग के लिए काम बहुत है, काम बहुत है, करने वाले नहीं। एग्जांपल दे दूं, छोटा सा एग्जांपल 5 मिनट लेंगे, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे इसके बाद में। आप अगर यहाँ पे 100 बच्चे हैं, हार्डली 15 से 20 ऐसे हैं जो कि लगातार मेरे को ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से। रिमेनिंग 25 ऐसे हैं जो सुन रहे हैं। और उसके बाद में ये रेशो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कुछ ऐसे भी जबरदस्ती बैठे हुए, दैट इज वेस्टिंग ऑफ टाइम। टाइम का सदुपयोग क्या है? केवल वही सदुपयोग है अभी जो आपने देखा, उससे सीख लो। वही प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। I appreciate the efforts of your institution. I did my law from campus law side at University. I graduated from Hindu College University. लेकिन आपकी इंस्टीट्यूशन, मेरा इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी इंस्टीट्यूशन में लगे एक्सपोजर देने के लिए अदरवाइज उसका समय समय पे मेरे जैसे और भी बंदे आएंगे आपको सिखाने के लिए, अपने एक्सपीरियंस बता देंगे। और उसका ध्यान दीजिए, आज ही सिर्फ 2 नोटिस आपको आने वाले 5 साल के बाद में हो सकता है 5000 रुपये, शुरुआत में 2000 रुपये, व्हाटएवर, दैट वुड बी योर रिवॉर्ड। अदरवाइज क्या है कि सर मुझे सिखा सर रहता हूं, मैं कर लूंगा सर, मैं कर लूंगा सर, मुझे आपके साथ रख लो आप। नहीं सर, मुझे आता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपने किसी लोगों को ज्वाइन किया, अरे नोटिस बना दोगे सर? नहीं, ये वो नेक्स्ट आप अपॉर्चुनिटी नहीं सर, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगी। अरे आपको हो सकता है वही लॉयर या वही लॉ फॉर्म उसका डायरेक्ट माइंड मैं चाहता हूं मेरा काम डेलीगेट कर दूं और मेरा सारा काम ले लो, मैं नया काम डेलीगेट करूं। तो बंदे दिखने में तो मैं कल तैयार कर रहा हूं, मैंने उनको डेलीगेट कर दिया, मैं बड़ा वापस सामने आ रहा हूं। बड़ा बंदे नहीं मिलकर मैं क्या बोलूं? मैं क्या बोलूंगा? अगर मुझे 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 50,000 मिल रहा है, 5,000 रुपये रखने का आपके लिए 5,000 हो जाए, लेकिन बंदे तो मुझको किसी ने रेडी करो। 128 लीगल नोटिस के इंटेंट्स में दोबारा ब्रीफ कर देता हूं। सबसे पहले हम मेंशन करते हैं टॉप क्लास पे कौन साइन कर रहा है लीगल नोटिस। आप काउंसिल हैं, लॉयर हैं, आप कर रहे हैं। उसके बाद मेंशन कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में चेक कर देता हूं, और बोल देंगे किसके लिए कर रहे हैं। उसके बाद क्या टाइटल है, क्यों कर रहे हैं, क्या है लीगल डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 130 ऑफ एनआईए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेंशन करिए उसमें। देन हु इज ऑथराइजिंग, इसमें बोला आपको मैं उन्हें एडवाइस किया है, उससे तो बात है होगी। आप सबको लॉयर समझता हूं, डिग्री से फॉर्मल है लॉयर्स को, जिस दिन आप लॉ ग्रेजुएशन में आ जाते हो उस दिन लॉयर हो जाते हैं। बाकी सब फॉर्मेलिटीज है, जैसे एनी एक्सपीरियंस इंडस्ट्री समझ रहे हैं। अभी से आज से ही अपने आप को लॉयर समझिए, क्रिटिकल थिंकिंग को लेके ही लोग न्यूज़पेपर के अंदर वही चीज देखिए जो लॉ से रिलेटेड है, कोई एक टॉपिक। जैसे मेरी आपने सिविल सर्वेंट्स का इंटरव्यू सुना होगा ना, बोलते हैं कि 1 साल के बाद नहीं तो फिर 20 साल के बाद, वही एक्चुअली लॉयर who is lawyer, who can address, who can recognize the issue, who can address that issue, who can raise voice,
not in the negative sense. For the well-being of the society, to be constructive, part of the society, not destructive. उसके बाद में हम मेंशन करते हैं फैक्ट कि भाई आपको हमने मेरे टाइम में इतना कुछ दिया था, अगर जरूरी है तो बताओ, अगर जरूरी नहीं है आप सिर्फ एक लाइन के एक छोटे से पैरा में मेंशन करके भेजिए। अगर आपको नोटिस आ गया तो उसका रिप्लाई बनाता हूं मैं। अगर नोटिस आए, अगर भेजना है तो क्या करेंगे, सिर्फ मेंशन करेंगे आपने चेक इशू किया था, दैट हैज बीन डिसऑर्डर्ड ऑन सो एंड सो, चेक काउंट की डिटेल बताएं उसको, यहां से राउंड था एंड सो एंड सो, और डिमांड करें नहीं चेक, राइट। अगर इसकी रिप्लाई करनी है तो क्या करेंगे, सेम वे के अंदर काउंसिल को रिप्लाई करेंगे आप, Commission Council for so and so, my client so and so has handed me over the legal notice dated issued by your court office on dated na. There is the reply in respect of the issued notice. Liability है, बताइए नहीं है, बताइए नहीं है तो साफ साफ बताइए है, you better know protect the interest of your client. लास्ट में अगर नोटिस भेज रहे हैं तो पेटेंट टीचर बॉडी में बताइए कि इस प्रकार से पेमेंट आपने डिसऑर्डर हो चुका है, किस तारीख में डिमांड करिए, नीचे से नीचे कहते हैं। स्पीड पोस्ट कराने के बाद में रिसीट ऑरिजिनल संभाल के रखना, दैट वुड बी आल्सो ट्रीटेड एज एन एविडेंस, आल्सो ट्रैक रिकॉर्ड, राइट। ऐसी सिविल लिटिगेशन के अंदर किसी का रिकवरी का हो सकता है, प्रॉपर्टी लीटी के अंदर ट्रांसफर प्रॉपर्टी का 06 के अंदर टर्मिनेशन ऑफ लीज राइट्स के लिए हो सकता है, एविक्शन के लिए हो सकता है। नोटिस आप किसी एम्प्लॉय को भी करवा सकते हैं, एम्प्लॉय के जरिए एम्प्लॉयर को भी एम्प्लॉय के जरिए करा सकते हैं, क्लियर लीज रहते हैं, क्या किसी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के लिए, क्या किसी लीज को टर्मिनेट करने के लिए, कई सारे छोटे लीगल नोटिसेस हैं। फॉर्मेट यही रहेगा, अदर बॉडी बदल जाएगी, इस फॉर्मेट को भी प्रैक्टिस करिए। उसके बाद में जितना आप पढ़ेंगे उतना ही बेटर उसके अंदर मैं सिंपल रखने की कोशिश करेंगे, एक थोड़ा सा ज्यादा सिंपल एक वीडियो में, जिससे कि कम्युनिकेशन करना जरूरी है। इट मींस इफ आई कैन नॉट communicate by you, there is no worth of any kind of language. मैंने बोला कि इंग्लिश का वर्ड यूज करते हो, हमने वर्ड यूज करते हो, नॉट नेसेसरी, ना जिसके लिए ना ही सामने वाले के लिए। उसका मुल्कोड मेमोरियल के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, फ्रंट पेज पे हम इनपुट लगाते हैं किस कोर्ट में इन पार्टीज के बीच में नीचे कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने एलिगेशंस यूज हुए, उसके बाद में स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट, मुद्दा क्या है आपका समरी के अंदर डिटेल, उसके अंदर आपने एक्सप्लेन रिसर्च और रिसर्च, राइट। और लास्ट में जो जिसको रिप्रेजेंट कर रही है सिग्नेचर में कौन आपकी टीम का, तीन चीजें बच्चे को डाउट थोड़ा बहुत ड्राफ्टिंग के लिए, बाकी सब प्रैक्टिस के ऊपर। बोर हो गए, कितने बच्चे बोर हो गए, सच बता दो, एक बच्चा बोर हुआ है, दो इतने सभी का साथ हो रहा है, चार। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कर लेते हैं, टैगोर से सुना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसे लोग कोर्स पूरा करोगे ये भी अच्छा मौका मिलेगा। अभी पहले क्या सिखाया, किस प्रकार से ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपनी नॉलेज, लीगल नोटिस इशू करवा डायरेक्ट बोर्ड पर मैनेज तो अपनी नॉलेज लेंगे, इस पर आपको इजीली न्यू कॉमर्स काम मिल जाता है, डाइवर्स करा दो। डाइवर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, अगर म्यूचुअल कंसर्न नहीं है, दोनों पार्टनर्स राजी नहीं है, तो काफी लेंथी प्रोसेस है, काफी मेहनत वाला काम है। बट अगर जो दोनों तैयार है, ठीक है, हमें अगर करना है क्या क्या शर्तें हैं, उसका फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट की प्रैक्टिस करेंगे। फॉर्मेट ऑफ द सोर्स है, प्रैक्टिस का वो बेसिकली ये कंट्रोल कैसे करते हैं, नहीं आपको पता करना चाहिए उसके अंदर क्या है।
एक नोटिस और देखना चाहें तो मेरे पास एक नोटिस का फॉर्मेट और है जिसके अंदर एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को भेजा है। जिसमें एक एम्प्लॉय ने विदाउट प्रॉपर इंटीग्रेशन फॉर्म का काम छोड़ दिया था, तो उसको इशू करा है। उसमें डिटेल्स मेंशन है इस कंपनी का क्या उसकी रिस्पांसिबिलिटीज थी, किस प्रकार से उसने अपनी सारी रिस्पांसिबिलिटीज को वायलेट किया है, और भी एम्प्लॉयर से डिमांड कर रहा है कंपनसेशन। इसमें आप नोटिस करेंगे उसमें 25,000 रुपये का क्लाइंट के सामने वाले पे चार्जेस फिक्स करके कि अगर ऑल्सो लाइबल टू पे 25,000 which I higher चार्ज करता है, वो हमने 130 को नहीं करा। दो कारण हैं। पहला तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन इसको अवॉइड करना चाहिए टू बी प्रैक्टिकल। कई बार इसको भी ना डिपेंड करता है कोर्ट को रिप्रेजेंट करे, इंटरप्रेट करे कि ना। अगर आप ये काम करते हैं तो आपको काम पड़ जाएगा। कोर्ट बोलता है जैसे सुप्रीम कोर्ट का सेडिशन है कि आपको वही डिमांड करना है जो उसको चेक डिसऑर्डर हुआ है। आप इंडिकेशन किसके मांग रहे हैं? कई लीगल नोटिस इकट्ठे हो जाते हैं। अभी रिसेंटली टाइम को बंद करो का नोटिस उन्होंने इशू करा, उन्होंने विद इंटरेस्ट क्लेम कर लिया 30। मैंने क्लाइंट को बोला आप साथ बैठिए, रिप्लाई करके उसको थोड़ा सा रिप्लाई क्योंकि यार वी हैव नो ऑलरेडी, बट वो इस लूज कर जाएगा। क्यों लूज करेगा? उसने केवल चेक अमाउंट ही मांगा था। Okay, now comes to diversification. Actually, का मैंने एग्जाम्पल दिया है विंडो मैनेजर का। सेक्शन 28 स्पेशल मैनेजर को कवर करती है। 10 है डाइवोर्स एक्टिविटी। अब एचएमए करते हैं, यूजुअली आपको ढेरों काम मिल जाएगा। जैसे एनरोल कराते हैं। पहली बात तो एक चीज याद रखिए, आप कभी भी लॉक करते समय तो अलग बात है, बैंक का मैंने हमेशा रखिए कि लॉ है अंटिल कि कोई आपके पास राइट भी नहीं कुछ इशू करने का, रिप्रेजेंट करने का, बट माइंड में रखिए कि आप लॉयर हैं। अभी से समझिए इस बात, ताकि जैसे एनरोल करते हैं तो अपने आप को ये नहीं कहा हाँ मैंने भी शुरू किया, नहीं आई एम लॉयर। शुरू किया दैट इज डिफरेंट थिंग। शुरू तो आपने कभी किया ही नहीं था। शुरू तो आपने लिटिगेशन स्टार्ट करी नहीं कभी, नोटिस लिटिगेशन शुरू हो गई। आप लॉयर हैं, नॉलेज रखिए, नॉलेज आपको दे रहे हैं। सर इसमें जो कंपनी में रखा है वो मालिकों के एम्प्लॉयर को नौकरी देने का एम्प्लॉय जो उसमें काम करता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल तैयार कर रखे हैं फैमिली कोर्ट्स जो कहते हैं। बेसिकली एक ही बिल्डिंग के अंदर या फिर डिपेंड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, डिफरेंट बिल्डिंग में फैमिली कोर्ट्स बोल दिया जाता है, राइट। उस फैमिली कोर्ट के अंदर अगर कुछ पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि हमें अलग होना है, प्लीज पे अटेंशन जेंटलमैन, प्लीज पे अटेंशन। अगर दो पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हमें अलग होना है तो उससे फॉर्मेट है ये सेकंड क्वेश्चन है, पढ़िएगा सेकंड क्वेश्चन। ऐसी पिटीशन एक फर्स्ट क्वेश्चन की होती है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हम बिफोर टाइटल ऑफ द बुक लाइक इन द कोड ऑफ रेलेवेंट प्रिंसिपल्स फैमिली कोड पटियाला हाउस, दिस पिटीशन वाज फाइल्ड बिफोर द पटियाला हाउस कोर्ट। नाउ HMA नंबर, रिजल्ट चेक नंबर, उसके बाद में इन द मैटर। अब इसको नोटिस करो आप, दोनों पेटिशनर हैं, रिस्पोंडेंट नहीं, बिकॉज इट इज म्यूचुअल। इन केस म्यूचुअल नहीं होता, देन वी हैव रेस्पोंडेंट इंस्टेड ऑफ पेटिशनर। वी हैव नेक्स्ट page mentioning party was memo of the parties,
Who is familiar with the word memo of the parties? Memo of the parties means details over both parties, their address, their parentage, court fee, whatever the prescribed court fee we have to fix while filing the petition. Then we mentioned petition under section 13B(2). If it was the first portion, then it would have B.A.L.B. 13B(1). Affidavits are of two types in our legal proceedings. Otherwise, affidavit is a different domain in the outside the court. So the supporting affidavit. Supporting affidavit means if we are filing a claim, we support the claim with supporting affidavit stating whatever the content of the claim are true and correct to the best of my knowledge. Another one is detailed affidavit. In terms of the guidelines prescribed by the Honorable High Court here, Rajat Gupta vs. Rupali Gupta. There are some facts which we have to admit or deny or disclose the truth as per the judgment. Copy of the settlement MOU. Before arriving at the spot of filing petition under the form of mutual note, parties usually prepare MOU. What thing is binding on which one? Usually it's a part of the procedure which describes the how much amount alimony, permanent alimony, when there is a amount. The husband will provide with another partner. Certified copies of the order is the second portion, then we annex certified order of the first portion. And first portion takes after completion of first portion takes 6 months to 18 months for filing the second portion. कम से कम 6 महीना, मैक्सिमम 18 महीना. 18 महीने के बाद फिर फर्स्ट पोर्शन निकाल हो जाएगा. 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा, but there are some certain judgments that on filing application, if court get convinced that there would be some negative impact on the relationship of the parties, or they have some other options to lead their life, then that 6 month period may be waived by the court. And it mentions who is for the petition number 1000 and who is for the petition number 2. This is the number of parties I was discussing. It mentions the Meenakshi Budakoti, daughter of President of petition number 1 versus Manoj Kumar Pascola. Then it comes to title of the petition for resolution of marriage by decree of divorce by way of mutual consent. बिल जुलकर वो उसमें divorce दे रही है. इससे पहले कंडीशन ये है कि कम से कम 1 साल का सेपरेशन होना चाहिए उनके बीच में. अगर सेपरेट नहीं है तो वेट करना पड़ेगा, फिर म्यूचुअल फाइलिंग कर सकते हैं. उसके बाद फिर इन डिटेल काफी लेंथी होगा, आप मेंशन करेंगे डेट ऑफ मैरिज, कब मैरिज हुई है, कहाँ मैरिज हुई है, डेट ऑफ मैरिज इसलिए ये देखने के लिए कितना एक साल का सेपरेशन है भी कि नहीं. उसके बाद में प्लेस ऑफ मैरिज, कॉज ऑफ एक्शन वहां का बनता है कि नहीं बनता जुडिशियल पर्पस के लिए. आमतौर पर जुडिशियल या तो मैरिज प्लेस या फिर साइडिंग
by the society or any other cause of action which goes within the local limits of the district court. Now let's say interesting table. We have to give details of the wife and husband to govern the laws. पहले क्या था, बाद में क्या था? Under type of marriage, under type of filing petition. Same details will be, filled by the respective party. Their status, age, residence. Then there is a description of the mentioning of the MOU. MOU क्या? 21st of September 2022. वो MOU भी दिखाते हैं. In the MOU, airdrops. Petitioner has agreed to pay total sum of rupees 10 lakh. Past, present, future maintenance permanent eligibility. तो the petitioner को respect नहीं. 10 लाख रुपए देंगे वाइफ को देने के लिए. अगर होने के लिए. एमओयू में मेंशन होगा कि क्या ये स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल हो गई है, क्या करनी है. कई बार बंच ऑफ लिटिगेशन होती है मैट्रिमोनियल से. अब सीरम सेल की 125 की डीवी पिटीशन तो आप दोनों ही साइड इस प्रकार से एमओयू क्या करते हैं. जी सर, जो आपने पॉइंट्स और सब पॉइंट्स बताए सर, इसका एक फॉर्मेट क्या है, मतलब किस टाइप में इसको फॉर्मेट से फ्रेम करना है? इसको आप मान सकते हैं जैसे 10 लाख रुपए मैंने बताया बंच ऑफ लिटिगेशन. मान लो हस्बैंड के ऊपर, उसके फैमिली मेंबर्स के ऊपर, गर्ल की तरफ से क्वांटिटी के एलिगेशन, सिक्योरिटी के, नौकरी के, बीवी के, यूनिवर्सिटी कॉलेज के हैं. 125 उसने क्लेम कर रखा है. 125 एप्लीकेशन होगा, पहले 125 नाउ 144 अंडर न्यू एक्ट मेंटेनेंस क्लेम कर रखा है. तो भी अदर लिटिगेशन हो सकती है. तो कैसे होगा कि एवो दे दे पैसा नहीं चला गया उसका, तो एवो तैयार करेंगे. क्या फर्स्ट मोशन तक क्या करेंगे? फर्स्ट करेंगे तो 10 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए फर्स्ट मोशन पे दे देंगे. बाकी 2 लाख रुपए जब डीडी पिटीशंस को, मेंटेनेंस पिटीशंस को विड्रॉ करेंगे तब पे कर देंगे. 198 की पेशी करना पड़ेगा, लाइक बनाना पड़ेगा. तो लास्ट अमाउंट तब पे करेंगे. तो ये बाइफर्केशन करके 10 लाख रुपए जो है उन्होंने म्यूचुअली एग्री कर दिया. अब अगर बेटा 10 लाख रुपए एक बार दे दिया, वो बोले चलो बेटा कर दे, राइट. तो अगर ऐसा नहीं कि वो बेटा बार बार कर दे, they have the process to recover the or to constraint for the proper execution. तो इसमें मेंशन किया उसने कि 498 के एफआईआर जो कैश करते समय 4 लाख को पे करेगा, रिमेनिंग बैलेंस 3 लाख को रिमांड को सेकंड मोशन स्टेटमेंट ये अभी दूसरे को डिमांड ऑफ लेके आएगा, चेक लेके आएगा. और सेकंड मोशन है फर्स्ट मोशन के आसपास 4 लाख से ले लिया है, इसने एग्री कर लिया 10 में से 4 लाख वापस मोशन पे ले लेंगे. मीनवाइल सभी चीजें विड्रॉ कर लेंगे, सेकंड मोशन पे पहले आमतौर पर 6 मंथ का टाइम पीरियड इसे रखा जाता है कि हो सकता है इनका प्रश्न अलग हो जाए. पर तोड़ना बहुत आसान है, बनाना बड़ा मुश्किल है. कोर्ट का ऐसा मानना होगा, राइट. तो 6 मंथ की डिग्री है. After the lunch, so students be seated first in the guest seat, okay? And after the lunch, there is a very engrossing session, and the cash prize will also be given by the sir after the lunch itself.